Hi guys, welcome to the eLearnum. In this video, we're gonna learn about the operation of process. That what are the operation that can be performed on a particular process. So there are two types of operations that can be performed on a process. The first one is process creation and the second one is process termination. In today's video, we're gonna learn about the process creation. In the next video, we're gonna learn about process termination. So let's start with process creation. So process creation basically means a process of creating a process. It means that there are processes, different processes, and a process can create a new process via process system call. A process can create several new process via process system call during the course of its execution. ओके यानी कि एक प्रोसेस दूसरी नई प्रोसेस को क्रिएट कर सकती है. ओके द प्रोसेस दैट क्रिएटिंग अ न्यू प्रोसेस इज कॉल्ड द पेरेंट प्रोसेस, यानी कि जो प्रोसेस एक नई प्रोसेस क्रिएट करती है उसे पेरेंट प्रोसेस कहा जाता है. और क्रिएटेड प्रोसेस जो नई प्रोसेस क्रिएट हुई होती है उसे हम चाइल्ड प्रोसेस कहते हैं. ओके सो एंड द एक्ट ऑफ क्रिएटिंग अ पर्टिकुलर प्रोसेस कॉल्ड स्पॉनिंग अ प्रोसेस. So it is basically a technical term. If you heard about spawning a process, it basically means the process of creating a process. Okay. Now, this is basically the term of creating a process signify. It means a process, parent process, which is actually creating a process. A process जो process को create करती है उसको हम parent process कहते हैं. A parent process can create several child process. Like a parent can have several child na? In your house, your parent can have several child. Your parent have you and your brother, your sister can have several child, but you have only a single parent. Okay, so a parent process can create several child process. This A is a parent process. It create two child process B and C. So A is considered to be what? A is considered to be a parent process. And these B and C is considered to be the child process of A. Okay. Now, B is considered to be a parent process for D and E. Okay. And D and E considered to be the child process for B. Okay. And C is considered to be a parent process for F. And F have no child. So we can say node with 0 child. And C we call node with 1 child. B we call node with 2 child because it having a 2 child. Okay. This is basically the architecture in which a process creation work. Okay. As you can see, a parent can have several child. Can have 2, can have 3, can have 4, can have multiple childs. But a child can have only a single parent. B have only a single parent, that is A. E only have a single parent, that is B. G only have a single parent, that is D. Okay. So parent to child relationship is what? One to many. One to many. Parent to child relationship is what? One to many, because one parent can have many child. But a child to parent relationship is what? One to one. One child can have only a one parent. Okay, this is basically the idea. So it basically say only a single parent is needed to create a process. A child can have a single parent while process can have a multiple child. Okay, this is basically the idea. Now let's understand what's the things that occur during the execution of during a process creation. So when a new process is created, certain possibility occur in term of execution. Executions के term में certain possibilities occur होती हैं. The first one is parent continue to execution concurrently with the process. It means the parent process create a child process. अब उन दोनों का execution कैसे perform होगा? दो तरीके हैं एग्जीक्यूशन परफॉर्म होने के. पहला तरीका जो है वो ये कह रहा है कि पेरेंट चाइल्ड के साथ कंकरेंटली यानी साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट होगा. यानी पेरेंट प्रोसेस और चाइल्ड प्रोसेस साइमल्टेनियसली एक साथ एग्जीक्यूट होंगे. पेरेंट प्रोसेस और चाइल्ड प्रोसेस साइमल्टेनियसली एक साथ ही एग्जीक्यूट होंगे. पहला तो ये तरीका है. दूसरा तरीका जो आता है वो ये कहता है कि पेरेंट तब तक एग्जीक्यूट नहीं होगा
जब तक उसके सारे चाइल्ड प्रोसेस टर्मिनेट ना हो जाए। जैसे in the previous structure, hierarchical structure, we can see A have a child B and C. So दूसरा तरीका क्या कहता है कि A तब तक एग्जीक्यूशन स्टार्ट नहीं करेगा जब तक B और C अपना एग्जीक्यूशन करके टर्मिनेट ना हो जाएं। ये दो तरीके हैं जिसमें पेरेंट और चाइल्ड प्रोसेस अपना एग्जीक्यूशन परफॉर्म करते हैं। ओके, डिपेंडिंग अपॉन कौन सा तरीका कौन सी सिचुएशन में बेटर प्रेफर करता है। ओके, द नेक्स्ट थिंग इस पेरेंट और चाइल्ड प्रोसेस की क्या पॉसिबिलिटी होगी इन टर्म ऑफ रिसोर्स एलोकेशंस के टर्म पे, यानी कि चाइल्ड प्रोसेस को कैसे रिसोर्स मिलेंगे। चाइल्ड प्रोसेस को दो तरीके से रिसोर्स का एलोकेशन मिल सकता है। द फर्स्ट इज डायरेक्टली फ्रॉम द ऑपरेटिंग सिस्टम। पेरेंट ने चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट कर दी, अब उस चाइल्ड को भी रिसोर्स चाहिए होंगे अपना एग्जीक्यूशन परफॉर्म करने के लिए। तो चाइल्ड प्रोसेस दो तरीके से रिसोर्स को गेट कर सकती है, या तो डायरेक्टली ऑपरेटिंग सिस्टम से, या दूसरा कि जो पेरेंट प्रोसेस के पास रिसोर्सेज हैं, पेरेंट प्रोसेस उस रिसोर्स को पार्टीशन कर दे अमंग इट्स डिफरेंट चाइल्ड। जैसे ए के पास जो रिसोर्सेज थे, ए ने उसको पार्टीशन कर दिया अमंग अपने डिफरेंट चाइल्ड बी एंड सी में। ठीक है, या तो ऐसे कर सकता है या फिर उन रिसोर्स की शेयरिंग कर सकता है अपने चाइल्ड्स के साथ। तो दो तरीके हैं रिसोर्स चाइल्ड प्रोसेस को मिलने के, या तो डायरेक्टली वो ऑपरेटिंग सिस्टम से ले ले, या फिर वो पेरेंट प्रोसेस अपने रिसोर्स पार्टीशन कर दे अमंग चाइल्ड प्रोसेस, या फिर शेयर कर दे अमंग चाइल्ड प्रोसेस। So this is basically the idea behind the process creation, that how a process creation work. What is process creation? Process creation is basically you can say a terminology of creating a process. The process create a new process by a process system call. Okay, the process which create a process is called a parent process, while the process which is created, that is called a child process. The relationship a parent process with have child process is what? One to many. A parent can have multiple child, but a child process can have only a single parent. Parent can have multiple child, but a child process can only have a single parent. Okay, then these things that occur during the process of execution, and these things that occur during the process of resource allocation. So this is basically an idea about the process creation. In the next video, we're going to learn about the process termination. Okay, and if you guys like that particular video, please don't forget to hit the like button, subscribe button and share button. Thank you.